Hi everyone, Namaste. This is Pooja Shah, and I wanted to share a beautiful topic today. Are you ready to learn about it, or are you ready to implement it today? Because this is really going to improve your life. The topic is Tulsi plant. In Hindi उसे कहते हैं basil leaves और holy basil. आपको पता है आपके ही घर में जो तुलसी का पौधा है ना, वो एक थर्मोमीटर या डिटेक्टर की तरह काम करता है। यानी अगर वो सूख जाए तो समझ लेना वास्तु में नेगेटिविटी है या नेगेटिव ऊर्जा है। और अगर वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है तो डेफिनेटली योर होम इज क्वाइट पॉजिटिव। बिकॉज तुलसी प्लांट जो आपके घर में होता है ना, वो 24/7 ऑक्सीजन एमिट करता है। सो टेक केयर दैट इट डज नॉट ड्राई। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है तुलसी प्लांट से भी ना बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, every day if you have 2 to 5 leaves of basil holy leaves, it improves your immunity, fight infections. Of course, it is an antibacterial, antiviral, antifungal, so it has all those properties, so it protects you from all the various diseases. It also reduces you from your stress, anxiety, mood swings. Yes, it gives you lots of mental clarity. You know, blood pressure. अगर आपके ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम है, अगर शुगर लेवल्स हाई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है, आई एम टेलिंग यू, तुलसी लीव्स इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट मिराकुलस रिजल्ट. So please start having it because it also improves heart diseases also. Respiratory health, अगर आपको प्रॉब्लम है या अगर आपको सही में improve करना है, then basil leaves is going to create magic in your life. Mucus in your lungs or throat, that will be cured. It also treats your cold, cough, asthma, bronchitis. Imagine it also heals your liver, kidney, and so many diseases related to it. And I'm sure you want to improve it. You want to improve it. So go and get a Tulsi plant because it helps your skin to be healthy. It helps your skin to glow, your hair to grow. It also prevents um, acne, skin infection, eczema, dandruff in your head, premature graying. So, wouldn't you love to have? We can eat direct leaves. I'm telling you, even empty stomach in the morning when you get up, you can have leaves at least 4 to 5 empty stomach. You can also boil those leaves in water. Maybe you take 1 cup, one full glass, in fact, and boil it to half a cup or half a glass, and you can have it. Trust me, it's going to give you two good results. Even tulsi oil is recommended. You can have that. There are 3 types of tulsi. That is Ram tulsi, Krishna tulsi, yeah, and even Vana tulsi. So ये मोस्टली वाना तुलसी जो होती है वो वाइल्ड लीव्स होती है. रामा तुलसी इज लाइक दैट ब्राइट ग्रीन एंड कृष्णा तुलसी इज लाइक पर्पलिश ग्रीन. सो बेस्ट इज दैट if you have tulsi leaves every day, it is also going to protect you from cancer because it has anti-cancer properties. So I'm sure you're going to have it. Yeah. And kidneys, as I told you, kidney stones can be also dissolved with tulsi tea or tulsi leaves or tulsi oil. Arthritis, yes, it can be cured. Gastro problem, it can be solved. And the best part, weight loss. Weight loss के लिए सबसे best उपाय है ये. So have it every day, at least 2 cups a day. Because it is also rich in vitamin A, C, K. It has calcium, it has magnesium, it has phosphorus, it has iron, it has potassium, it has protein, and it also has fiber. It purifies your blood, treats ulcer in your mouth. तो आप सोचते होंगे माय गॉड कितने सारे क्वालिटीज है. सो वी आर लाइक ब्लेस्ड टू हैव तुलसी लीव्स एंड तुलसी प्लांट एट होम. Even as per Vastu and Reiki, Tulsi plant is must at home. So if you want to also quit smoking, then Tulsi is going to help you. Chew some leaves and see craving kam ho jayegi. It balances your Vata and Kapha dosh in your body. Tulsi juice, if you have 10 to 20 ml, it's good. You also get seed powder of Tulsi.
then you can have 3 to 6 grams. That is also good. Spiritually, if you ask me how Tulsi can help you, so Tulsi is associated with Lakshmi goddess. So Lakshmi ji kisko nahi chahiye ghar pe? We all want it, because Lakshmi ji is the goddess of wealth, prosperity, and also Vishnu's wife. Without Tulsi leaves, कहते हैं, there is no gateway to the heaven also. So please start having Tulsi at your home also, and also feed your body also. Tulsi is a symbol of purity, devotion, love, faith, trust, and Vishnuji's favorite symbol of peace and harmony and protection. And definitely it gives you good fortune, prosperity, wisdom, and knowledge. It also purifies the air at your home or any place where you plant it. ये वहां के एयर को प्योरीफाई करता है, पूरी नेगेटिविटी जो है ना और इविल एनर्जीज को निकालकर बाहर फेंक देता है. सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू एंड गिव्स यू पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. सो आई एम श्योर यू वुड लव टू हैव देम. What are you waiting? Offering Tulsi leaves to Vishnu ji and Krishna ji or Rama ji or Narsimha ji, या एनी अवतार्स ऑफ देम. बोलते हैं कि आपकी विशेस फुलफिल हो जाती है, आपकी जो भी मन में इच्छा है वो पूरी हो जाती है. लेट्स ट्राई इट, लेट्स डू इट. या वेयर अ नेकलेस ऑफ तुलसी. आपको पता है छोटी छोटी जो सूखी हुई तुलसी के स्टेम होते हैं ना, उसकी बीड्स होती है, उसकी माला बनती है जो धागे में पूरे पिरोई जाती है. इट ऑल्सो हेल्प्स यू फ्रॉम इविल. सो अगर आप वो माला पहनते हो तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करता है इविल एनर्जी से. वास्तु में तो इसका बहुत महत्व है. वेयर कैन यू कीप इट? सो अकॉर्डिंग टू वास्तु, वेयर कैन यू कीप इट? यू कैन कीप इट फ्रॉम द नॉर्दर्न एरिया टिल द साउथ एरिया. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ you can easily keep. So north, east and south, ये इतने दिशा में आप तुलसी प्लांट रख सकते हो. एंड इट ऑल्सो, यू ऑल नो इट, पंचामृत में तुलसी का जो लीव्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो आई एम श्योर even gifting tulsi plant is a blessing and receiving blessings also. So are you thinking of gifting your friends or family a tulsi plant? If so, go and do it. It's going to create magic, I'm telling you. ये ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लाइफ में आने वाला है और ब्लेसिंग्स के रूप में ही दूसरों के लाइफ में भी एंटर करने वाला है. सो आई होप यू लव दिस टॉपिक. आई होप यू लव दिस सेशन. आई होप यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ तुलसी प्लांट. थैंक यू. दिस इज पूजा शाह. आई लव यू.